Hi everyone, I'm Alka Sharma. I'll start with Class 8 Geography, Chapter 1, that is Resources. Now, when we try to understand the basic question, what are resources and why are they important? I can say that anything which is of use for us is a resource. For example, water is a resource because we use water. Similarly, books, utensils, papers, clothes, food grains, vegetables, fruits, all these things are resources because we use them in our daily life in one way or the other. Okay, the electricity is a resource because we use it in our house. The bus we use to get home from school are all resources. All these things have something in common. They have all been used by us, so they have utility. Utility क्या होती है? Utility means उपयोगिता. जब किसी चीज़ का उपयोग हो सके उसे हम utility कहते हैं. Now the question arises, how does something become a resource? The answer is things become resources only when they have a value. All resources have some value. People themselves are the most important resource. लोगों के ideas, उनकी knowledge, उनकी discoveries, ये सारी चीज़ें और भी resources को create करने में help करती हैं. There are 3 types of resources. First one is natural resources. Second is human-made resources. And third one is human resources. Let's talk about natural resources first. Natural resources क्या होते हैं? Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. The air, the water, the soils, sunshine, plants, animals, minerals are all natural resources. Natural resources, जिन्हें हम प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं, they are utilized by human beings either directly or indirectly for survival. Natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. Renewable resources कौन से होते हैं? They are those which get renewed. Some of these are unlimited. Renewable resources वो होते हैं जो कि renew होते जाते हैं और इनका unlimited stock होता है, such as solar and wind energy. हाँ, अगर हम लोग लापरवाही से इनका यूज़ करेंगे तो इनके स्टॉक पर असर पड़ सकता है, like water, soil and forest. So we can make judicious use of all these things. Then non-renewable resources की बात आती है तो I can say that there are those which have a very limited stock. एक बार अगर stock exhaust हो गया तो it may take thousands of years to be renewed. जैसे कोयला है, coal, petroleum and natural gas are some examples. The distribution of natural resources depends upon a number of physical factors like terrain, climate and altitude. किसी एरिया में नेचुरल रिसोर्सेज का होना या नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इन 3 फिजिकल फैक्टर्स यानी कि टेरेन, जो जोन है जिस एरिया में वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्लाइमेट, उस एरिया का आबो हवा कैसा है एंड ऊंचाई, एल्टीट्यूड कैसा है, इन 3 फिजिकल फैक्टर्स पर नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है. And the distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. Human-made resources. This is the second type of resources.
Human-made resources are also known as capital resources, and they are material riches created by humans that can be used to create more wealth. For example, factories, roads, buildings, and of course technology. अब इसमें एक चीज़ ये आती है कि लोग नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल ये सारी चीज़ें बनाने के लिए करते हैं. जैसे मैंने अभी बताया आपको, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, मनी एंड टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए करते हैं. तो these things are made by humans, so they are known as human-made resources or man-made resources. So we do call human-made resources or man-made resources. Human-made resources को हम man-made resources भी कहते हैं. Coming to third type of resources, and that is human resources. Human resources कौन से होते हैं? लोग, हम लोग, आप, ये सब क्या है? Human resources हैं. People are human resources. People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skills and technology to do so. Technology क्या होती है? Technology is also a resource, and technology is the application of latest knowledge and skills in doing or making things. Okay? Education and health help in making people a valuable resource. Education और health जो है, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये लोगों को एक valuable resource, एक अमूल्य संसाधन बनाने में help करता है. Employee selection होती है जब ट्रेनिंग्स में या फिर इंटरव्यूज़ में. कंपेंसेशन देता है जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स देता है. लीडरशिप, मोटिवेशन एंड सर्विस, then evaluation, all these things to do with people at work. Okay, education, health help in making people a valuable resource. And when we improve the quality of people's skills for making them be able to understand more resources, it is called human resource development. तो यहाँ एक बात आई है, I talked about human resource development, and this is that when we improve the quality of people's skills, जब हम लोगों के जो skills होते हैं, उनके कौशल होते हैं, उनकी क्वालिटी इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो फॉर मेकिंग देम एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, ताकि लोग और ज़्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकें, तो हम इसे क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज कंजर्विंग रिसोर्सेज. कंजर्विंग रिसोर्सेज मीन्स अब संसाधनों की रक्षा कैसे की जाए, इनका कैसे संरक्षण किया जाए. हाउ टू कंजर्व रिसोर्सेज. ज़रा सोचो, अगर हमारी अर्थ से सारा वाटर सूख जाए तो क्या होगा? और what would happen if all the trees cut down will get nothing to eat and drink? There will be no shade. So we have to be careful. Okay? अब इसमें मैं आपको एक बात बताऊंगी कि conservation जो होता है, it includes both the protection and rational use of natural resources. Resource conservation is management of the use of natural resources to provide the maximum benefit to current generation, while maintaining capacity to meet the needs of future generation. Resource conservation means using the available resources, जो already या पहले से मौजूद resources हैं, उनको कंजर्व करके रखना है in very careful manner. Resource conservation means using the available resources carefully and giving them time to get renewed. Okay? This is resource conservation. Alright, let's talk about sustainable development. Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the
ability of future generations to meet their own needs. Or in other words, we can say that sustainable development is economic development that is conducted without depletion of natural resources. सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम सतत विकास भी कहते हैं। वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बगैर यानी कॉम्प्रोमाइज किए बगैर पूरा करना, दिस इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन्स वो डेवलपमेंट जिससे कॉन्टिन्यूसली हमें बनाए रखना चाहिए, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Okay, then I can say that building a new community in a new community in a previously underdeveloped area without destroying the ecosystem or harming the environment is an example of sustainable development. There are 3 pillars of sustainable development. 3 pillars माने जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। फर्स्ट इज इकोनॉमिक, सेकंड इज एनवायरमेंटल एंड थर्ड वन इज सोशल। दीज 3 पिलर्स आर वेरी इम्पोर्टेंट एंड जिन्हें हम इनफॉर्मली किसके साथ रेफर करते हैं? लोगों के साथ। ठीक है, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट्स, इन सब के साथ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करते हैं? रेफर करते हैं। अब देखिए, जैसे सोशल पिलर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो उसे हम पीपल के साथ क्या करते हैं? एसोसिएट करते हैं, उसके साथ अटैच करते हैं। एनवायरमेंटल पिलर है तो एनवायरमेंटल पिलर को रेफर करेंगे हम प्लैनेट के साथ। एंड ये जो इकोनॉमिक पिलर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसे हम प्रॉफिट्स के साथ क्या करेंगे? रेफर करेंगे। तो these 3 pillars are very, very important pillars of sustainable development. But there are various principles of sustainable development. अब बहुत सारे principles हैं sustainable development के। Number 1 is respect and care for all forms of life. We must care and respect for all forms of life. रिस्पेक्ट एंड केयर करनी चाहिए सभी फॉर्म्स ऑफ लाइफ की। देन नंबर 2 इज इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ओके, द एम इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ विद मिनिमम इंटरफेरेंस एंड मिनिमम डैमेज to the existing resources that we have. Third is conserve the earth's vitality and diversity. Number 4 is minimize the depletion of natural resources. Number 5 is change of personal attitudes and practices towards the environment. That means changing over other practices or way of use of resources would be one of the important methods to use and preserve the resources for future generations. And finally, enable people and communities to have their own environment and develop their own best use for natural resources. These are principles of sustainable development. Okay, so with this I conclude this chapter. We have discussed resources, their classification, resource conservation, and sustainable development. I can say that each person can contribute by reducing consumption, recycling, and of course reusing things. We can make packets and shopping bags of old newspapers. जो क्लोथ्स हमने डिस्कार्ड कर दिए हैं, हम उनका भी रीयूज कर सकते हैं। See, the electricity is not wasted in your house. Don't waste water. Every drop of water is precious. So
that's all about resources. Okay, stay indoors, stay safe, stay healthy.